अब हम देखेंगे इसका मॉडर्न एक्सपेक्ट, फ्रैक्चर्स। भग्न का मॉडर्न एक्सपेक्ट फ्रैक्चर्स क्या होता है? इंजरी टू मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इंजरी टू मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम कैन रिजल्ट इन डैमेज इन द बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स डैमेज हो जाती है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी इन द बोन। इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? एक तो ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर ये है ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी में ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल, स्ट्रेस फ्रैक्चर। और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कौन सा होता है? डिस्प्लेस, अनडिस्प्लेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद एक्सटर्नल, क्लोज, ओपन फ्रैक्चर। फिर ऑन द बेसिस of treatment, simple, complex, on the basis of pattern, transverse, oblique, spiral, communicated, segmental, butterfly। सबसे पहले ट्रॉमेटिक, on the basis of etiology में traumatic fracture, the fracture that occur due to trauma is called traumatic fracture। ट्रॉमा की वजह से अगर हो जाए, normally bone can tolerate considerable force, but excessive force may result in fractures like road accident, fractures caused by fall, road accident, right? Pathological, due to some pathology by which the bone is made weak by underlying disease, is called pathological fracture। For example, fracture through bone weakened by metastasis। Stress fracture, due to stress, unusual stress, getting concentrated on one part of the bone। March fracture in the metatarsal bone, in the shoulders, in the root march। Then on the basis of displacement, undisplaced and displaced fracture। Undisplaced में होता है, these fracture are easy to identify by absence of significant displacement। And displaced जो होता है, fracture caused by displaced, and the displacement are fracturing force, muscle pull, gravity, displacement from shift, angular। Then on the basis of relation with external environment can be closed and open fracture। Closed fracture, the fracture not communicating with external environment, that is overlying skin and intact, closed fracture। Open fracture, this you see, this is example of non-displaced, non-normal and displaced and undisplaced fracture। Here in undisplaced, the absence of significant displacement, undisplaced, and displaced, the fracture are displaced by muscle pull, gravity or fracture fragment, muscle pull। Open fractures in which break in the overlying skin and soft tissue lead to fracture communicating with external environment is called open fracture and can be made from outside। Open fracture can be internally open, externally open, okay। Well, on the basis of the treatment, simple and complex fracture. Simple fracture in two pieces, the easy to treat and is called simple fracture, the transverse fracture of humerus। Complex in the fracture in which multiple pieces are usually difficult to treat, communicated fracture of tibia। सिंपल में क्या हो रहा है कि दो पीसेस में फ्रैक्चर हो जा रहा है, जैसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो रहा है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, द ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, कम्युनिकेटेड, सेगमेंटल और बटरफ्लाई। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर, फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर to long axis of the bone। Fracture is caused by beating or bending force। Oblique, the fracture line is oblique, such a fracture is called bending force।
spiral in which the fracture line runs spirally in more than one plane. ठीक है, twisting forces by caused by twisting forces. Communicated multiple fragments. Fracture with multiple fragments, crushing or compression. Segmental fracture. In this, there are two fractures in one bone. Two fracture in one bone, but at different level, is known as segmental fracture. Butterfly. This is oblique fracture that creates a large triangular wedge-shaped fragment located between. इसमें क्या हो रहा है? Large triangular wedge-shaped fragment located between proximal and distal fracture fragments. Then we see clinical features. Fracture is pain मिलेगा naturally, deformity, swelling, loss of continuity, irregularity, crepitus, bony tenderness, loss of function, abnormality, abnormal mobility. Here you can see in this diagram transfers. देख लीजिए, perpendicular है along the long axis, then oblique, spiral, segmental at different level, butterfly, and communicated. Investigation: X-ray, CT scan, MRI. General fracture management is 3 phases में emergency care, definite care, rehabilitation. Emergency care में क्या करेंगे हम? इसको याद, ये प्रिक्सेप प्राइस PRICE प्राइस होता है जैसे. तो R से क्या हो गया है? रेस्ट टू पार्ट बाय स्प्लिंटिंग. I से ice therapy to reduce the swelling, compression to reduce swelling, elevation to reduce swelling. Then definite care. देखेंगे. डेफिनेट केयर में क्या है? इसको RIP. इससे याद रखिए, रिडक्शन, इमोलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ द फंक्शन. रिडक्शन, इमोलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ द फंक्शन. रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन एक टेक्निक है जिसमें डिस्प्लेस फ्रैक्चर टू द टेक्निक ऑफ सेटिंग डिस्प्लेस फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट. Method of reduction: close manipulation. This is initial and standard method of reducing fracture, done under general anesthesia. Then continuous traction, open reduction, immobilization. Non-operative methods में आएंगे strapping, sling, cast mobilization. Strapping में क्या होता है? Fracture part is strapped to an adjacent part of the body. In sling में क्या होता है? Upper fracture of upper extremity is immobilized in sling. This is the mostly to relieve pain in cases. Strapping, sling, cast immobilization. This is the most common method of immobilization. इसमें क्या होता है? Plaster of Paris जो is commonly used. POP slab जो होता है, POP इसमें plaster slab covers only the part of the circumference of the limb. Or POP, circumference of the limb, immobilization of the soft tissues. POP cast or the plaster cast covers the whole of the circumference of the limb. ये POP cast का आप देख सकते हैं. Then we see fracture healing, stages of fracture healing. In this stage of hematoma, HGCRM से याद रखना, HGCRM. Stage of hematoma, granulation tissue, callus formation, remodeling और modeling. hematoma में जो होता है less than 7 days. इसमें क्या होगा? hematoma में blood leaks out through torn vessels of the bone. Blood leaks हो जाएगा through torn vessels of the bone. hematoma, the fracture in peristonium tissue. So blood is leaking out through the torn vessels. So the name suggests the stage of hematoma, it's less than 7 days. Then the stage of granulation, 2 to 3 weeks. In this sequence, the sensitized precursor cells produce cells which differentiate to provide blood vessels, fibroblast and osteoblast.
ओके देन स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा था, इसमें कैलस फॉर्मेशन होगा 4 to 12 weeks, मतलब मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, फ्रैक्चर क्लिनिकली यूनाइट नो मोर मोबाइल, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, wooden woven bone is replaced by matured bone, then stage of modeling, many layers, modeling of the endosteal and peritoneal surface of the fracture of the become indistinguishable from the parent bone. So these are the stages: hematoma, granulation, stage of granulation tissue, stage of callus formation, remodeling and modeling.